So, hello dear students, welcome to the live session of Eduins Cbse, and the subject is physics and the chapter is electricity. So, today we will discuss about the second part. So, at the previous lesson we had discussed about the electricity, what is electricity and what is the voltage difference and the potential difference. Now today we have to discuss about the resistance, current and the potential difference and their relations. So today we will going to discuss about the resistance. So how could we derive the resistance from the Ohm's law? So at the very first we have to discuss about the Ohm's law, right? So am I audible to you, dear students? I think the sound is clear and also the picture is clear. So we can start our lesson together. Now, and once again, you all are welcome to Eduins Cbse. So let's discuss about the electricity chapter. Okay, and this is our today's motivation. So, let's think together. That is, winners are not the people who never fail. That means failure is not the last. Okay, this is the opportunity to us. So, whenever we don't give up, so winners are the people who never quit. That means who never give up at their dreams. So, every challenge is a lesson, and every mistake is also a lesson. So we have to step forward to our success. So this is the main thing, to keep going to the way of our success. So it is not closer as we think. So we have to go through it. Okay, so focus on your goals, stay consistent and keep learning and keep improving to upgrade yourself. Be disciplined, because discipline is the most important thing for a student. Okay, so be disciplined and success will follow you. Okay, and this is the channel Eduins, and for you students, your channel is Eduins Higher Secondary, trusted online platform for you. Okay, so today we will discuss about the Ohm's law. So what is Ohm's law? What is the statement of the Ohm's law? Ohm's law, formulated by whom? By German physicist जॉर्ज साइमन ओहम in 1827. So जो जर्मन फिजिसिस्ट है जॉर्ज साइमन ओहम, उसने ये लॉ डिराइव किया था. तो क्या कहा था इस लॉ में? देखिए कि ओहम्स लॉ dictates that the current passing through a metallic conductor is directly proportional to the voltage. मतलब ये वोल्टेज मतलब क्या है कि वोल्टेज across its end, मतलब this is the potential difference. जिसका डिफरेंस जितना ज्यादा होगा उससे क्या होगा कि so the amount of the current flowing through the circuit is increased when the voltage is increased. So this is the linearly proportional relation. That means V versus I. This is the linear proportional relation. तो क्या कहा था ओहम साहब ने कि जब कोई मेटालिक मतलब कंडक्टिंग सरफेस से ही पास करने वाला है इलेक्ट्रिसिटी, तो क्या होगा, इन दोनों एंड का मतलब कि ये जो टर्मिनल्स है V and VA and VB, if we take it, assume it, VA is the terminal voltage of the terminal A and VB is the voltage of terminal B. So there is a voltage difference. If there is no difference, then no current will pass. So इनमें क्या होना चाहिए? डिफरेंस होना चाहिए. किसी का वोल्टेज ज्यादा होना चाहिए और किसी का कम होना चाहिए. तो अगर हम देखें कि VA VB से ज्यादा है तो क्या होगा,
इस तरफ से, मतलब ये होगा पॉजिटिव एंड और ये होगा नेगेटिव एंड। सो यहाँ से करंट कहाँ फ्लो करेगा कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो इनमें से अगर हम एज्यूम करें कि VA और VB में जो डिफरेंस है वो कितना है कि V है, से दिस इज V। ओके, सो क्या होगा कि कुछ कंडीशन अगर सही से रहा तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये अगर ज्यादा हुई तो जो करंट पास होने वाला है उसका अमाउंट भी ज्यादा होगा। अगर इसका वैल्यू कम हुआ तो क्या होगा, जो करंट है पासिंग थ्रू द मेटेलिक कंडक्टर इज आल्सो डिक्रीज्ड। ओके, सो ये होगा V वेरिजियस I। ये क्या मतलब है कि ये लीनियरली प्रोपोर्शनल है। जब V बढ़ेगा तो I भी बढ़ेगा, अगर V घटेगा तो I भी घटेगा। तो ये है वो रिलेशन। ओके, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, टेम्परेचर को स्टैटिक होना चाहिए, मतलब कि कांस्टेंट टेम्परेचर। ओके, एंड द अदर फिजिकल क्वांटिटी मस्ट बी स्टेबल और मस्ट बी कांस्टेंट। सो देन वी कैन state the law. Okay, this is the main condition here. Okay, so now we get here V various I. So V is equal to I, we have to write V is equal to I. So for this equation to be equal, there we have to take an constant. So what will be the constant? So when we take the proportional sign, convert the proportional sign into the equal sign, then we have to take some constant. So what will be the constant? The constant must be R. So this is the relation that became V is equal to IR. So here we get R and we don't know what is the R. We know about the voltage difference, potential difference, and we all know about the current type, but this is the new term for us. Okay, so what is the R? R means the resistance. So from here we get the concept of the resistance. So do you have any doubt? तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है किसी को? तो अब क्या है कि R हमने सीखा, तो R का कुछ, तो ये भी तो एक क्वांटिटी हुआ ना, तो इस क्वांटिटी का भी कुछ यूनिट होना चाहिए क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड होगा, और इसका तो उसका कोई यूनिट भी होना चाहिए क्योंकि ये दोनों क्वांटिटी का रेशियो है। कौन दोनों क्वांटिटी का रेशियो है ये? तो देखो यहाँ पर हमने क्या देखा यहाँ से कि देखो यहाँ पर हमने क्या देखा कि V वेरिजियस IR होता है, मतलब ये होता है V वेरिजियस IR। सो ये R V इज इक्वल टू IR, सॉरी। सो यहाँ पर अगर V इज इक्वल टू IR हम लिख सकते हैं। तो R क्या है, देखो R अगर हम लिख पाते तो कैसे लिखेंगे R को? V बाई I। सो ये क्या हुआ, V बाई I, मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस and the ratio of the current flowing through the circuit. So इन दोनों जो क्वांटिटी है, एक है पोटेंशियल डिफरेंस और the other is the current. So the ratio of potential difference and current is the resistance or R. तो R क्या करता है, ये जो करंट फ्लो होता है सर्किट में, तो ये क्या जानते हैं हम कि यहाँ पर चार्ज का फ्लो होता है। तो ये चार्ज फ्लो होगा जब, तब क्या होगा, इसे भी तो रोकने के लिए कुछ चाहिए, तो ये R क्या करता है, अपोज करता है किसको, ये करंट को जाने के लिए अपोज करता है। तो R अगर ज्यादा हुआ तो यहाँ से R के साथ हम V और I को भी देख सकते हैं कि ये कौन सा रिलेशन में है। तो देखो कौन सा रिलेशन में है, तो R अगर हम देखें तो देखा कि ये V बाई I है। तो इनमें से अगर किसी को हम कांस्टेंट पकड़े तो पहले हमें I को कांस्टेंट पकड़ना है। तो when the I is constant, मतलब कि करंट फ्लो जो फ्लो हो रहा है उस करंट क्या हो रहा है, सेम करंट फ्लो हो रहा है, तब
R ज्यादा होने के लिए V को क्या होना चाहिए, इंक्रीज करना चाहिए, डिक्रीज करना चाहिए, ये हमें जानना है। तो I कांस्टेंट है, मतलब कि इसे हम प्रोपोर्शनल जैसे लिख पाते, तो V वेरिजियस R होता, और हम ऐसे भी लिख पाते कि R वेरिजियस V। सो दिस इज द लीनियर प्रोपोर्शनलिटी रिलेशन, मतलब कि अगर एक इनमें इंक्रीज करे तो दूसरा भी इंक्रीज करेगा, और अगर ये डिक्रीज करे तो दूसरा भी डिक्रीज करेगा। तो यहाँ से हमने क्या सीखा कि ये है लीनियरली प्रोपोर्शनल, मतलब कि ये दोनों एक जैसे ही होगा, मतलब अगर एक बढ़े तो दूसरा भी बढ़ेगा और एक घटे तो दूसरा भी घटेगा। तो अब क्या देखेंगे यहाँ से, तो अब हमें जानना है कि I के साथ इसका रिश्ता कैसा है। तो देखो, so there is V is equal to IR. So R is equal to, we all know that V by I. So here if we take V as a constant, so then we can get R various 1 by I. So from here we can tell that, we can surely tell that R and I in the inversely proportional relation. So when R increases, the I must be decreases. So if R increases, I must be decreases, and when R decreases, I must increases. Okay, so this is the inverse proportional relation. So this opposes the current flow through a circuit. So for a circuit or for a conductor, we can measure the resistivity of the metal. Then we can assume it like it is conductor or superconductor or insulator. So that's how we can determine which is conductor or poor conductor. Okay, got it? So the unit measured in ohm. So we can tell that the SI unit. So this is the SI unit, and we measured with the ohm sign to honor scientist Simon Ohm. Okay, so we have to write the front letter or the first letter of O capital. Okay, so this is how we can write a unit. We all know the rules to how to write unit. Okay, so this is the ohm and 1 ohm. So we know that R is equal to V by I. So here when we get 1 ohm, okay, so when V is equal to 1 volt and where I is equal to 1 ampere, so there we get the ohm. So how? Let's see. R is equal to 1 by 1. So volt by ampere. So we can write volt per ampere as ohm. So this is the SI unit of resistance, and the definition becomes 1 ohm is the resistance of a conductor when a potential difference of 1 volt drives the current of 1 ampere. So when क्या होगा, यहाँ पर देखो कि 1 ओम किसको कहा जाएगा, कि अगर रेजिस्टेंस 1 ओम कब होगा कि एक कंडक्टर का पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए 1 वोल्ट, और क्या होगा कि इस 1 वोल्ट डिफरेंस के वजह से यहाँ से 1 एम्पियर करंट का फ्लो होगा, तो इसे ही कहा जाएगा कि ये है 1 ओम। ओके, ठीक है, सो दिस इज द डेफिनेशन. ओके, we got this from the Ohm's law, right? So do you have any doubt till this? So resistance here at this image, we can easily tell that here. So this is the voltage, this is the current ampere I, and this is the resistance. So this is the cause that opposes the flowing current. Okay, so now V various I, we can easily write it like V various I and V various R.
So voltage is linearly proportional with I when R constant and vice versa. That is V varies as R when I is constant. Okay, so now the relation R and I is inversely proportional. So it opposes the current flowing through the circuit. Okay, so this is the resistance. तो यहाँ से हम क्या सीखे कि resistance क्या है, ठीक है। तो चलो अब इसके बाद हम सीखते हैं। So rearranging the equation I is equal to V by R. This shows that current is inversely proportional to resistance. Doubling the resistance cuts the flowing current exactly in half. इसका मतलब क्या है कि अगर R है किसी का रेजिस्टेंस तो वहां पे I क्या होगा कि V by R होगा। तो अगर इसको हम डबल करें मतलब 2R हो जाए तो यहाँ पर क्या हम लिख पाएंगे कि I is equal to इसका वैल्यू बढ़ के हो गया है 2R. So that means this is half of VR. मतलब पहले वाला जो करंट था उसका बिल्कुल हाफ होने वाला है ये जब इसका रेजिस्टेंस डबल होगा, ठीक है। तो ये है, तो डेफिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस क्या है? इट इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। मतलब इंट्रिंसिक का मतलब क्या है कि जो कंडक्टर होता है इसका खुद का प्रॉपर्टी होता है कि कंडक्टर टू अपोज और रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू इट। सो एंड द SI यूनिट वी ऑल नो अबाउट दिस एंड वी नो अबाउट द डेफिनेशन ऑफ 1 ohm आल्सो, राइट? सो किसी के मन में कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, किसी का कोई डाउट है वो भी पूछ सकते हैं। डू यू हैव एनी डाउट? सो पुट अ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। So we don't have any doubt till now, right? So this is the resistance part. देखो, so ये जो रेजिस्टेंस एंड द आई मतलब जो करंट है इसका अगर कोई ग्राफ ड्रॉ किया जाए तो ये ग्राफ कैसा होना चाहिए? ये बिल्कुल लीनियर होगा। तो कैसे लीनियर होगा ये भी तो हमें जानना है। तो चलो देखते हैं कि लीनियर क्यों होता है। चलो ये क्वेश्चन आपके पास है तो इसे सॉल्व किया जाए। चलो देखते हैं कि कैसा होता है ये। अगर V वेरिजियस, हमने क्या सीखा कि V वेरिजियस I होता है, मतलब V इज इक्वल टू IR होता है। तो यहाँ पर देखो अगर V 0 होगा तो Y भी I भी 0 होना चाहिए। So that's how this is from the origin. So the graph starts from the origin. So origin से क्यों पास करता है? क्योंकि V I दोनों में अगर एक भी क्वांटिटी 0 हुआ तो दूसरा भी 0 होगा। मतलब कि अगर कोई पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं होगा तो करंट फ्लो भी नहीं होगा। तो और करंट फ्लो नहीं हुआ मतलब पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। इट्स सिंपल, राइट? नाउ अगर हम एक पॉइंट को पकड़े तो ऐसे देखते हैं कि इस पॉइंट में देखो वोल्टेज 0 से बढ़ चुका है। तो यहाँ पर हम क्या सीखेंगे कि I भी तो बढ़ चुका है। अब क्या देखो अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करें एक पॉइंट ले तो यहाँ से हम क्या सीख पाएंगे? देखो कि यहाँ पर भी V
बढ़ चुका है पहले से, तो I भी पहले से बढ़ चुका है। तो ऐसे करके हम सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो ये क्या होगा कि ये लीनियर होगा, मतलब कि स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ऑरिजिन। सो ये ग्राफ कैसा होना चाहिए कि स्ट्रेट लाइन passing through the origin. Okay, straight line passing through the origin. So that's how the graph looks. Okay, now we have to study about the factor that affecting the resistance and resistivity. Okay, so the factors are the electrical resistance of a uniform metallic conductor depends on three main parameters. So why we use the term metallic conductor again and again? Why? Because metals are conductor. This is the basic nature of metal. And there is also a rule breaker, but this is the basic nature of a normal metal. So that's why we take the metallic conductor, and it depends on three main parameters. So what are those parameters? So at first it is directly proportional to its लेंथ। तो R किसके साथ कौन सा रिलेशन में है? तो लेंथ अगर इंक्रीज करे, मतलब कि जिसका दो कंडक्टर, हम सोच रहे हैं कि ये दो कंडक्टर है, तो इसका हम एरिया सेम रखेंगे। तो अगर ये लंबा हुआ, मतलब इसका लेंथ ज्यादा हुआ, तो देखो यहाँ से I जितना जल्दी पास करेगा और जितना करेगा, इसमें जाने के लिए यहाँ पर ये जो क्या हुआ यहाँ पर लेंथ कम हुआ, तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस काम करेगा उससे ज्यादा रेजिस्टेंस काम करेगा इसमें, क्योंकि ये है लंबा। तो इसके साथ क्या देखा कि रिलेशन कैसा होगा कि R वेरिजियस L, मतलब कि इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। तो इसका लेंथ के साथ जो रेजिस्टेंस होता है ये बढ़ता है, और अगर लेंथ कम हुए तो ये घटता है। तो इससे क्या सीखे हम कि जो जितना लंबा होगा कंडक्टर तो उसका रेजिस्टेंस होगा ज्यादा। तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। नाउ इट is inversely proportional its area of cross section। तो ये हम कैसे सोच पाएंगे कि देखो लेंथ अगर सेम रहा, ठीक है, दो सेम लेंथ, सो दिस इज 2 और L लेंथ तो सेम है लेकिन एरिया इसका ज्यादा है। इसे A1 ऐसे A2 हम पकड़ते हैं, तो A1 is less than A2। सो नाउ देखो ये जो चार्ज फ्लो होगा क्या होगा, किसमें ज्यादा होगा कि यहाँ से जाने से इससे जाने से और यहाँ से जाने के लिए क्या होगा, देखो कि यहाँ से जाने के लिए उसको बहुत कम मेहनत करना पड़ेगा। तो ये एरिया अगर बढ़े तो क्या होगा कि I बढ़ जाएगा, मतलब करंट फ्लोइंग बढ़ जाएगा। तो फ्लो ऑफ करंट अगर बढ़ गया तो यहाँ पर क्या होगा कि the resistance must be decreased, so the resistance must be decreased, so that's why it is inversely proportional to its area of cross section। So we can write it like R varieties 1 by A, and here we can write R varieties A। So from here we get two relations, so one is R varieties A and the other is R varieties 1 by A। Okay, now the third parameter, it depends directly on the nature of the material of the conductor। So मटेरियल की वजह से क्या होगा कि मटेरियल का रेजिस्टिविटी जो पावर होता है, इससे क्या होगा कि किसी का रेजिस्टिविटी ज्यादा है तो किसी का कम है। इस वजह से क्या होगा कि उस मटेरियल के ऊपर ये डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये दोनों मेन जो हुआ कि लेंथ और एरिया, इसको कंबाइन किया जाए तो हम क्या इसमें से क्या सीखेंगे कि यहाँ पर तो R वेरिजियस L है एंड 1 by A है, तो इसे हम ऐसे लिख पाएंगे कि R वेरिजियस L by A। ओके, सो टू इक्वल द रिलेशन,
So equal the relation, we have to take a constant. So what will be the constant? So the constant will be rho, and this is known as the resistivity or specific resistance. To equal the relation between these two sides are very serious, we have to take the constant. So this is the constant rho and this is L by A. So rho is called as specific resistance or the resistivity of the material. Okay, it is the constant or proportionality termed of electrical resistivity or specific resistance. So for which, if one material has more resistivity, then it is not the good conductor. So for a good conducting surface, the resistivity must be lower. Okay, so the resistivity must be lower. So for the metals of greater resistivity, that become the poor conductor, and for less resistivity, the metal can become a good conductor. So that's how it depends on the resistivity. Okay, so the term resistivity. Okay, we know about R is equal to rho L by A. So now we have to calculate the value of rho. So what will be the value of rho? Let's solve the equation. Rho is equal to RA by L. So we have to determine the unit. So from this we can determine the unit, right? तो कैसे determine किया जा सकता है? तो देखो यहाँ पर, देखो ये जो crucial properties है, इसको जानने से पहले हमें क्या जानना है कि देखो ये जो rho is equal to हमने सीखा कि RA by L. So R का जो यूनिट है वो क्या है? ओम है, ओम. And for A the unit is meter square, because this is the area, this is the surface area. So this is M square, मतलब मीटर स्क्वायर. सो फॉर लेंथ के लिए क्या होता है कि मीटर होता है, तो मीटर और मीटर स्क्वायर में एक घटेगा, तो यहाँ पर क्या रहेगा कि ओम मीटर. सो दैट इज द SI unit. So that's how we can evaluate the SI unit from the equation rho is equal to RA by L. So that's how we have to obtain the value. Okay, so now the SI unit of resistivity is ohm meter, and we can evaluate it through the equation, right? So now the material characteristics. So how resistivity can change the characteristic, मतलब कि कौन सा वाला गुड कंडक्टर होगा और कौन सा वाला होगा कि पुअर कंडक्टर है. इंसुलेटर भी तो होता है ना, तो कौन कैसा होना चाहिए. तो मेटल के लिए कैसा होता है, नॉन मेटल्स के लिए कैसा होता है. क्यों मेटल्स आर कंडक्टर, व्हाई नॉन मेटल्स आर poor conductor or insulator. So that's the question, right? Now material characteristic. Resistivity is an intrinsic characteristic. मतलब कि resistance जैसे intrinsic characteristic है, extrinsic नहीं, बिल्कुल intrinsic characteristic है, बिल्कुल वैसे ही resistivity भी होता है intrinsic property. So for this, resistivity is an intrinsic characteristic property of the material. तो material के लिए ये होता है intrinsic property. तो it depends solely on the nature of the substance and its temperature. So temperature अगर बढ़े तो ये resistivity change होने लगता है. तो क्या देखो, and is entirely independent of the conductor's physical dimension. तो लेंथ और एरिया में डिपेंड नहीं करता, इस पे करता है कि उसका मटेरियल सो क्या है. तो देखो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन रेजिस्टिविटी. तो रेजिस्टिविटी को बेस करके कैसे मेटल्स को क्या किया जा सकता है, क्लासिफाई किया जा सकता है. तो देखो मेटल्स एंड एलॉयज हैव वेरी लो रेजिस्टिविटी, values ranging from 10 to the power minus 8 ohm meter to 10 to the power minus 6
ओहम मीटर। तो क्या सीखा हमने कि लो रेजिस्टिविटी होता है मेटल और एलॉयज के लिए, तो वो कौन सा रेंज है कि 10⁻⁸ से 10⁻�6, मतलब कि देखो so that is the 10⁻⁸ term. Okay, so that's much smaller. Okay, so that making them excellent conductors of electricity. So that's how this is become good conductor. This is becomes the good conductor. Okay, now and for your information students, today we have live class. We all join in the science class. For tomorrow we have 5:15, from 5:15 the mathematics class. Okay, so that's routine for tomorrow. When two or more resistors. Okay, now, when two or more resistors are joined end to end consecutively, so before solving this, we have to study about so we have to know about the insulators. Okay, before knowing this, we have to know about the insulator. So for insulator, the value of the resistivity of insulator is 10⁻12 ohm meter to 10⁻17 ohm meter. So that's a much bigger value for resistivity. So there is impossible to flow any current through this surface. So this becomes the insulator. So that's how it becomes the insulator. Okay, for the resistivity is much higher than the metals and alloys. So this is very much bigger value, 10⁻12 ohm meter to 10⁻17 ohm meter. So after that, we have to know about the combination. So देखो क्या होगा यहाँ पे कि when two or more resistors, मतलब कि एक से ज्यादा रेजिस्टर्स को अगर हम ज्वाइन किए, एंड टू एंड करें या फिर दोनों का वोल्टेज डिफरेंस सेम रखे, तो इससे क्या बनेगा कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है कि एक से ज्यादा है, ये तो हम जानते हैं। तो यहाँ पर दो तरह की कॉम्बिनेशन होता है। तो एक होता है, तो अगर हम कॉम्बिनेशन की बात करें तो यहाँ से क्या सीखेंगे कि यहाँ पर जो कॉम्बिनेशंस है वहां से हम सीखेंगे कि यहाँ पर दो तरह के कॉम्बिनेशन होता है, एक है सीरीज एंड द अदर इज पैरेलल। तो कौन सा वाला सीरीज है और कौन सा वाला पैरेलल, देखो तो इसे हम शॉर्टकट से भी सीख सकते हैं। तो कैसा होगा कि एंड टू एंड, मतलब एक का एंड है और दूसरे का इनिशियल पॉइंट, मतलब यहाँ से एक खत्म होगा और एक रेजिस्टेंस शुरू होने वाला है। तो इसे हम बोल पाएंगे कि ये है सीरीज कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस। सो दिस इज द सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस हियर, एंड इफ वी टेक दिस एज R1, R2 and R3, so there are two potential terminal points and their potential is VA and VB. So that's why this is the series combination. And what is the parallel combination? So let's watch.
if the end point and starting point are the same for all the resistors, then it is called the parallel combination. So for this, the terminal points A and B contains the potential VA and VB. So now for the three resistance R1, R2, R3, they all share the same potential difference through it. So the potential difference must be VA minus VB for R1 as well as R2 as well as R3. And the current. So how the current divided? So from here, the current do not divided in the series connection. So there I and there also the current I for the series combination. But there is a path, there is many paths. So the current divided. So if this is I current, then it divided into three parts because we got three resistance. So I1, I2, I3. Then it's flowing through the circuit I1, I2, I3 and then combined again and make the I current. Okay. So this is the parallel and this is the series combination. So this is the parallel and this is the series combination. Now we have to determine the equal or equilibrium resistance. So equivalent resistance, what will be the equivalent resistance? So we have to know the equivalent resistance before solving the parallel and series combination. So इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि इन तीनों रेजिस्टेंस को हटाकर ऐसा रेजिस्टेंस को लाना चाहिए, मतलब कि इसका वैल्यू ऐसा होना चाहिए कि इन तीनों के बराबर हो, मतलब कि यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसको भी चेंज ना करे और यहाँ पर जो आई करंट फ्लो हो रहा है इसको भी चेंज ना करे, तो इसे कहा जाएगा कि इक्विलिब्रियम है। मतलब यहाँ पर इन तीनों को हटाकर ऐसा रेजिस्टेंस लाना चाहिए, मतलब यहाँ भी सेम, तो इन दोनों के लिए द वैल्यू ऑफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर नॉट द सेम, सो वी हैव टू कैलकुलेट इट और डिराइव इट फ्रॉम द इक्वेशंस। सो दैट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कि क्या होगा यहाँ पर कि देखो जो ये वोल्टेज का डिफरेंस है, मतलब पोटेंशियल का डिफरेंस है, इसको भी ना चेंज करे और जो करंट फ्लो हो रहा है उसको भी चेंज ना करे, मतलब वैल्यू को सेम रखना चाहिए कि इन तीनों मिलकर जो वैल्यू देने वाला है ये सेम ऐसा ही करने वाला है। तो यहाँ पर हम VA माइनस VB से IR जो मिलेगा यहाँ से भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लगाने के बाद भी ऐसा ही वैल्यू मिलना चाहिए कि I और VA माइनस VB बिल्कुल चेंज ना हो, ठीक है। सो दिस इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। सो दिस इज आवर टॉपिक फॉर टुडे एंड at the next class we have to discuss about the combination and determine the value of the equivalent resistance for series combination and also for the parallel combination. So hope you all will understand at the next day, and for today you have understood the topic we have discussed. Okay, so that's all for today. And if you like the live class, do subscribe our YouTube channel Eduins Cbse, and also thanks for watching. So that's all for today, dear students. We will meet again at the next class where we will discuss about the equivalent resistance of series combination and the parallel combination.